India, a traditionally cash-driven economy, has the highest fintech adoption rate in the world at 87%, beating the global average of 64%. ऐसा चलता रहा तो इंडिया जरूर एक दिन कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी बनेगा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम देवजीत एंड आइए इस वीडियो में फिनटेक इन इंडिया पर थोड़ी चर्चा करते हैं। फिनटेक की हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। फिनटेक 1.0, 2.0 एंड 3.0। फिनटेक 1.0 में हमने टेलीग्राफ एंड मोर्स कोड यूज करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया था फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। During 1950s, the first financial product in the industry was introduced, credit cards. And for a fact, हम आज भी credit cards use करते हैं। 1950s में जो introduce हुआ था। इंडिया की अगर सिचुएशन देखें उस टाइम, जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिश राज बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था एंड काफी लोगों ने बैंकिंग सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट किया था उस टाइम। अब आइए बात करते हैं फिनटेक 2.0 की। Online banking started in the 1980s and 1990s. It pushed the fintech industry to the limelight. काफी banks during the same time online banking को experiment करने लग गए थे और इसी के कारण वो बहुत ही popular हो रहा था। In India, ICICI Bank was the first bank to step into the internet banking space. काफी कम services start की थी, जैसे account details देखना, within the bank money transfer करना, ऐसी services start की थी। अब काफी और बैंक्स ने सेम पाथ को फॉलो करके ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट किया। काफी चैलेंजेस भी आए उस टाइम पे, जैसे टेक्निकल इश्यूज, फ्रॉड और सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज, फिनटेक 3.0। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 हैपेंड, व्हिच फर्दर पुश्ड फिनटेक। नाउ पीपल स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड स्टार्टेड डेवलपिंग ट्रस्ट ऑन न्यू कंपनीज, जो कि काफी फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे। काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए थे वर्ल्ड वाइड विद द रिलीज ऑफ बिटकॉइन इन 2009, एप्पल पे इन 2014, बिकॉज दे सॉ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ फिनटेक एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ फिनटेक इन इंडिया टू। सो देयर वाज यूरेका मूवमेंट फॉर फिनटेक इन इंडिया इन 2016. It was on 8th November 2016 when Prime Minister Narendra Modi announced demonetization to ban all currency notes with the denomination of 500 and 1000. इसी दौरान काफी पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म्स एंड फिनटेक कंपनीज ने फायदा उठाया टू पेनिट्रेट द मार्केट। They indeed received heavy funding to develop their products. Companies like Paytm, MobiKwik, PhonePe, so on launched their products in the market. देखा जाए तो 2016 से फिनोमिनल ग्रोथ हुई है इस सेक्टर में और काफी स्टार्टअप्स को अच्छी फंडिंग मिली है, mainly digital payments, lending and wealth segments. Now talking about COVID, the COVID-19 pandemic has dramatically accelerated the digitization of MSMEs across India. हमने एक shift observe किया है to e-commerce, and this shift has motivated merchants to enable digital access along with digital payment mechanism, from keeping records and inventory management to connecting with customers or credit providers. अब हर एक merchant एक्सप्लोर कर रहा है इस सेक्टर में, बिकॉज दे आर विटनेसिंग द ग्रोथ एंड दे आर अडॉप्टिंग द डिजिटल टूल्स टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। एंड इंडियन फिनटेक रेज्ड $9 billion yet alone in 2021. Before moving to other factors, let's talk about what are the subsectors inside fintech. First is digital payments. UPI का नाम तो सबने सुना ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये है क्या? बेसिकली ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिससे हम मोबाइल टू मोबाइल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बिफोर यूपीआई हमें बार बार सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी, बट नाउ यूपीआई एलिमिनेट्स द नीड टू एंटर द बैंक डिटेल्स। दिस इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई, इंडिया सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग लोन्स फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें डिजिटल कंज्यूमर लेंडिंग, एसएमई फाइनेंसिंग, P2P लेंडिंग और कई सारी चीजें आती हैं। कंपनीज लाइक लेंडिंग कार्ड, लेजी पे, जेस्ट आर इनटू ऑल्टरनेटिव लेंडिंग। सो नेक्स्ट इज वेल्थ टेक। यू मस्ट बी फेमिलियर विद एप्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाने में, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को सही करने में और कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं।
It uses big data, AI, deep learning to analyze your investments, thus improving your portfolios. Next is InsurTech. InsurTech refers to new insurance technology जिससे हम customer experience improve कर सकते हैं. It amplifies policy management, risk management and so on. There are many startups in this segment as well, like Policy Bazaar, Easy Policy, so on. Now let's talk about neobanking. Neobanks को हम banks बोल सकते हैं जो purely online exist करता हो, with no physical branches. Philar, they are at a nascent stage as compared to well-established banks which are trusted by billions of people. They leverage technology and AI to offer personalized services to customers while minimizing operating costs. इसके सर्विसेज हैं रिटेल नियो बैंक्स हैं, SME नियो बैंक्स एंड सो ऑन. इसमें भी कुछ स्टार्टअप्स हैं लाइक नियो एंड फिनिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सबसेक्टर कॉल्ड रेगटेक. बेसिकली टू मैनेज रेगुलरिटी प्रोसेसेस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, जैसे रेगुलरिटी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस. देयर आर मेनी स्टार्टअप्स इन दिस स्पेस एज वेल लाइक सेपे, क्लियर टैक्स एंड सो ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स दैट हेल्प्स फिनटेक. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेटर्स लाइक सेबी और आरबीआई के साथ जुड़कर काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी. इनिशिएटिव्स लाइक जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स जस्ट टू इंप्रूव द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, बिग डेटा helps users to personalize their payments and other services. This has been supplemented by large-scale adoption of mobile payments. और ये तभी possible हो पाया जब हमारे पास low-cost smartphones that is accessed by billions of people in India and low-cost 4G data available. इन सबको मिलाकर ही एक better ecosystem बन रहा है इंडिया में. Now let's talk about future of fintech. There lies an unaddressed opportunity that is huge. I'll tell you, जनधन अकाउंट्स ने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराया काफी लोगों को इंडिया में, बट देयर एंगेजमेंट विद द फाइनेंशियल सेक्टर इज लो. 14% ऑफ दीज अकाउंट्स स्टिल रिमेन इनएक्टिव एंड जो पेनिट्रेशन रेट है अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का वो काफी लो है इंडिया में अभी. अगर हम MSMEs की बात करें जो कि 1/3 ऑफ द कंट्रीज GDP को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें 1/6 ऑफ द 60 मिलियन MSMEs access credit from formal sources. और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा opportunity of $340 billion present है for other companies. So there is a huge market to tap in. India का fintech sector is predicted to grow to $150 to $160 billion by 2025. अगर हम थोड़ा numbers देखें तो digital payments from January to August in 2021, the transaction totaled to 6 trillion rupees. That is a huge amount. The next is technology, as usual, would play an important role to make it accessible to everyone, especially blockchain. ये game changer हो सकता है इंडिया के लिए if used to its full potential, क्योंकि it can offer a quick and economical way of transaction. The last is critical mass for partnership-led growth. काफी banks और financial product companies have entered into partnership to enable new customer acquisition and better customer engagement. इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड अगर हम साथ में आकर कुछ करें तो बिल्कुल पॉसिबल होता है. सो इन कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम लेवल चेंजेस आर ओपनिंग अप अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू मॉडल्स एंड कई सारे इनोवेटिव टेक एनेबल्ड यूनिकॉर्न्स बनने वाले हैं इन इंडिया इन द सेम सेक्टर. मेनी सेगमेंट्स ऑफ फिनटेक आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया एंड विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया जरूर काफी इनोवेशन लाएगा फिनटेक using the top emerging technologies and brilliant minds. So if you enjoyed this video, please like, comment and share it with your friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll bring more such videos in the future.